in general, like I would suggest कि especially in the first 2 years of your college, इतना stress नहीं है. Join a society and तुम्हारा इकलौता purpose college आने का पढ़ाई करना या एक job ढूंढना नहीं है. Very important, but that's to get a personality. It's very important. And I have faced this in interviews that sometimes the questions are framed in a manner that there might be multiple ways to solve it, but the interviewer wants you to solve it in a particular way. We need to start picking up questions and not know ये कौन से topic का and solve it, क्योंकि interview में तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि ये इस topic का subject like question है. Appearing for an interview, I would suggest that write production level code. Don't write क्या कहते हैं for int I equal to 0. Write, use meaningful variables, write a clean code, add comments. What I get asked a lot is about how to get into Google, and the biggest issue that I think there is that people don't apply for Google. So hi everyone, welcome back to the channel. I am Bipul Singh, a third year student at DTU, and आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जर्नी जानेंगे आस्था मैम की कि कैसे उन्होंने DTU से गूगल कंपनी में अपनी जो भी जर्नी रही उस चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब मैं तो गूगल में हूँ नहीं, तो मैं आपको उतना ज़्यादा अच्छे से इंसाइट्स एंड जो भी प्रोसेस होता है वो आपसे शेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने आज इनवाइट किया है आस्था मैम को. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सो लेट अस इंट्रोड्यूस आस्था मैम. Hi everyone, I'm Astha mohta. I am a software developer at Google. I passed out in 2020 from DTU and I did my computer engineering from there. Right now, I work with the Cloud Spanner team at Google, which is basically the database at Google, and I'm really excited. Thank you for having me. So basically this video is divided into 3 parts. तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने कॉलेज में रह के प्रिपेयर किया एंड ऑल दैट कॉलेज स्टफ. एंड सेकंड पार्ट में हम उनके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे. एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइफ एट गूगल. जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम थर्ड पार्ट में जानेंगे. तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. सो आस्था मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कोडिंग कब स्टार्ट की एंड क्या बेसिकली पाथ फॉलो किया आपने, मतलब बेसिकली रोड मैप, आपका क्या पर्सनल रोड मैप रहा? मैंने कोडिंग सीखना सेकेंड ईयर में किया था. आई वॉज वेरी बैड एट पॉइंटर्स एंड आई डिसाइडेड C++ तो नहीं हो पाएगी मुझसे, तो मैंने जावा में कोड करना स्टार्ट किया. एंड सिंस कॉलेज आई हैड टू डू इट इंडिपेंडेंटली सिंस कॉलेज में C++ होती है. एंड सेकेंड ईयर आई स्पेंट मोस्टली लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स, बट जब क्या कहते हैं थर्ड ईयर से पहले समर वेकेशन में is when I started competitive coding, because हमें आइडिया था कि कंपनीज आने वाली है. एंड पर्सनली आई फील कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट इफ like somebody puts in their 3 months of vacation into competitive coding at that point, that should be like a great kickstart for your career, because there are going to be a lot of companies that come for internships and stuff. So I interned at UHG, which is a company that came on campus, and I got placed over there. Personally, मेरी कोडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी जब मैं थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में थी, क्योंकि लाइक आई सेड मैं काफी लेट हो गई थी टू द प्रोसेस. बट आई थिंक समथिंग दैट वाज really important for me was कि every time I went to to give a test. Every time I couldn't crack one, my friend and we would go to the library and we would solve that question. And I think that's the reason why, and like ठीक है बड़ी कंपनी नहीं निकली स्टार्टिंग में, but end तक that is why like internship at least लग गई. And the internship is a really great place to figure out if this is what you want to do in your career. And obviously it gives क्या कहते हैं कॉलेज का एक बहुत important part है getting a job, so it definitely helps you give that confidence कि
I will at least like you can work towards a PPO at that company and stuff like that. So this video is in association with UNACADEMY. अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन यू माइट बी हैविंग सम क्वेश्चंस लाइक कि व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री राइट नाउ एंड व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, और या फिर व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सम ग्रेट आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस लाइक Amazon, Google एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर कोड शेफ रैंकिंग्स। देन अनअकैडमी गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने जितनी भी सारी चीज़ें मेंशन करी है वो सारी चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो फ्रॉम देयर होस्ट। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द होस्ट। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द होस्ट जो कि लाइव प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे, most of them are working in some top companies like Amazon, Flipkart, Google, and along with that they are 7-star coders on CodeChef and are industry experts with years of working in the top companies, and इनके एक्सपीरियंस के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर में। एंड उसी के साथ साथ दे विल बी इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ गेस्ट लाइक HR एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप कंपनीज, एंड वहाँ पे आपको चांस मिलेगा अपने क्वेश्चंस वगैरह जितने भी आपकी क्वेरीज है आप वहाँ पे जाकर आराम से पूछ सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लाइव आ रहे हैं एंड यू कैन बेनिफिट इट फ्रॉम दैट। एंड सम ऑफ द शोज आर हायरिंग अपडेट्स इन स्टार्टअप्स एंड मेजर टेक कंपनीज, हाउ टू अप्लाई इन देम एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन लाइव शोज में पता चलेगी। एंड उसी के साथ साथ वन ऑफ माय फेवरेट शोज विच इज़ प्री प्लेसमेंट टॉक्स फ्रॉम HR, जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े टेक कंपनीज के HRs हैं वो अपने इंटरव्यू प्रोसेस आपसे शेयर करते हैं कि कैसे कैसे आप इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो एंड क्या क्या उनका प्रोसेस होता है हायरिंग का। एंड ऐसे कई सारे और भी शोज़ है जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे करेंटली लाइव हैं। एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ गया होगा कि किस दिन कौन सा कोर्स होता है, सो यू कैन चेक दैट आउट एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू कैन अटेंड दैट सेशन। एंड नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सम मॉक इंटरव्यू सेशंस एंड लर्न सम कोर्सेज ऑन प्रोग्रामिंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एटसेट्रा। एंड आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी नॉमिनल फी विच इज़ ₹999। एंड अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो उससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उससे आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी फॉर 899। एंड अब आगे मैं आपको लव भैया के शो के बारे में बताना चाहूँगा। अभी शो किस बारे में है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड यू माइट बी वंडरिंग कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि मेजर टेक कंपनीज में पूछे जाते हैं लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल, देन लव भैया का एक शो है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ गया होगा डेट एंड टाइमिंग्स कब कब होता है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो और उसी के साथ साथ लव भैया जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इन दिस शो। जितने भी लिंक्स हैं यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक इट आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इफ़ यू टॉक अबाउट सम GPA। अगर हम यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं तो आपके टाइम पे कॉलेज की GPA की कितनी इंपॉर्टेंस रही इन गेटिंग योर जॉब? सो एग्जैक्टली उल्टा हुआ, मेरी GPA काफी कम थी जब इंटर्नशिप पीरियड में। इट वाज 7.6 एंड इंटर्नशिप्स यूजुअली सिंस देयर वर सो मेनी किड्स इट मेड सेंस राइट, तुम GPA के बेसिस पे like cut off set करते थे how many people can sit for the company. So I remember at my time like जब मेरी intern लगी थी तब campus पे like 20 companies आ चुकी थी because you can see right, and I counted I couldn't like sit for 10 or 11 of them because मेरा GPA low था. Personally I feel GPA is really important because even though मेरी GPA कम थी, GPA is a great sign that you are consistent, you're a consistent worker. And I know people are really pissed at companies for keeping that as, you know, as something to cut, like not let people sit for the interviews, but it totally makes sense because it, ठीक है तुम शायद बहुत स्मार्ट हो, बट इफ यू आर नॉट अ कंसिस्टेंट वर्कर देन क्या कहते हैं उसका कुछ उखाड़ नहीं लेगी कंपनी, एंड कंपनी 2 घंटे में उतना क्या बता पाएगी जो शायद GPA तुम्हारी 4 साल से तुम्हारे बारे में बता सकती है. So I would say कि ठीक है अगर तुम्हारा GPA great नहीं है, it's cool, you can still apply to a lot of companies and you can get in, but if you still have the time to improve it, I would suggest definitely work on it, and it's not that hard. I was at DTU. हाँ, ये तो मैं भी अपनी तरफ से कह सकता हूँ, यही होता है एकदम एग्जैक्टली। एंड मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि सोसाइटीज़ ज्वाइन करने से मतलब कि कुछ इम्पैक्ट होता है बेसिकली रिज्यूमे वगैरह पे, एंड जो भी शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है बंदा, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करता हूँ तो उसकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है तो उससे क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अ गाय हु हैवंट जॉइंड एनी सोसाइटी इन द कॉलेज? So see, personality development is a very important part. So obviously companies in general, like for example, I had a 45-minute round in Google about leadership, and you know if and that's where I talked about all the societies and all the work that I did there and how I showcased leadership in those roles. So companies do look for people who have a more balanced resume, and I mean it is a good to have thing.
it's like it तुम्हारा कंपनी में नहीं हो जाएगा क्योंकि तुमने सोसाइटी ज्वाइन की थी, but it definitely adds, it tells the company that you are beyond someone who just studies. And personally तुम जब एक सोसाइटी ज्वाइन करते हो, you meet new seniors, they help to guide you. वो सीनियर्स कल को जाके तुम्हें रेफरल भी दे सकता है. तो बहुत सारी चीजें होती है जो in general, like I would suggest कि especially in the first 2 years of your college इतना stress नहीं है. Join a society and तुम्हारा इकलौता पर्पस कॉलेज आने का पढ़ाई करना या एक जॉब ढूंढना नहीं है. Very important, but that's get a personality. It's very important as you move forward. सो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यानी कि आपने जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर किया था. तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या कोडिंग रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे. बेसिकली रिसोर्सेज तो हम सबको मिल जाते हैं, बट द डिफरेंस इज कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो एंड कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स आप देना चाहो. मतलब आपने क्या प्रिपरेशन में कुछ आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट किया था बाकी सारे कैंडिडेट से, जिससे आपको वो जॉब मिल गई. So as you said, resources obviously सबके पास होता है. It is important to use these resources well. I personally concepts वगैरह पढ़ने के लिए मैं बस YouTube पे search कर लेती थी and I would just watch the most popular famous YouTube video जो थी. But practice is what is the most important thing. So I used personally lead code. मुझे उसका interface काफी अच्छा लगता था. And something that I would suggest, जो मुझे अपनी preparation में बहुत important लगा था, lead code has this discuss section where people will write their approach of solving a problem. तुम कोई भी problem लोगे तो एक से ज़्यादा तरीके होते हैं to approach this problem, and there is somebody who has done it better than you most likely. तो and जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, तुम मल्टीपल तरीकों से सॉल्व कर सकते हो. सेम तरीके से कोडिंग का क्वेश्चन भी तुम मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करते हो. तो it develops on how you perceive a question. It helps develop that. So every time I used to code a question, I would afterwards go to the discuss section and read other people's solutions. And if it was something that was very different from my solution, I would, I would try to implement it as well. And I have faced this in interviews that sometimes the questions are framed in a manner that there might be multiple ways to solve it, but the interviewer wants you to solve it in a particular way. So that is very important. Something else जो मुझे अपने Google के interview में लगा था, I'll give you an example of a problem. So there's this very popular problem online called course schedule. तो basically मान लो तुम्हारे पास as a student 4 subject है, and subject A is a prerequisite of subject B, and you need to like ऐसे बहुत सारी dependencies दे रखे हैं subject की, and you need to tell कि क्या कहते हैं, is it possible to take this sequence of subjects to complete these prerequisites. So when you actually come down to solving it, तुम एक directed graph बनाना है और check करना है cycle है या नहीं. But nobody is going to ask कि directed graph की cycle check करो. It's an implementation based question. It's your job to figure out कि क्या approach है इस question को solve करने की. And that is something जो बहुत important है, जो हम miss out कर देते हैं when we prepare. हम topic wise चीजें solve करते हैं. We need to start picking up questions and not know ये कौन से topic का and solve it, क्योंकि interview में तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि ये इस topic का subject like question है. Other than that, I think DP से काफी लोग डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, but don't leave DP for the last day. नहीं होगा वो. जब तुम 50 क्वेश्चन कर लो तो शायद 51st क्वेश्चन तुमसे खुद हो जाएगा. And practice is like very important. So that other than that, like if you are appearing for an interview, I would suggest that write production level code. Don't write क्या कहते हैं for int I equal to 0. Use meaningful variables, write a clean code, add comments, because you are, especially in big companies, your interviewer is not the only person looking at your code. They're going to forward it to a committee or like discuss it among themselves. If your code doesn't make sense, they are looking for people who can write code well.
time and space complexities are very important, so always keep them in regard and practice करो, like क्योंकि कई बार होता है हम बहुत basic questions के time and space complexities गलत कर देते हैं. मैंने अपने खुद के इंटरव्यू में किए थी, तो इसलिए I think that this is something like which is important to me. And yeah, and talk throughout the entire process. स्पेशली अब तो रिमोट इंटरव्यूज है, तो क्या कहते हैं, सामने वाले को नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो. मे बी यू आर राइटिंग अ सब ऑप्टिमल कोड, मे बी क्या कहते हैं, वो उसे दे नो डिफरेंट अप्रोच देन योर्स, एंड जब तक तुम उन्हें नहीं समझाओगे तो वो कैसे समझेंगे. सो ट्राई टू टॉक थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस. क्या कहता है, व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, इट रियली हेल्प्स. टोटली वर्क्स. एंड अब मैं पूरे प्रोसेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मतलब कंपनी आई थी गूगल की, मतलब कैसे पूरा प्रोसेस रहा पूरा इंटरव्यू का एंड टिल द फाइनल सिलेक्शन, कैसा वो पूरा प्रोसेस, पूरा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहो तो. I did not apply, like I did not get an interview for Google on campus. I was actually approached by a recruiter off campus, and the first time I applied for Google, I got rejected. So this was my second attempt. I had actually joined a job, and first like they asked me to interview, so I interviewed again. The recruiter is like most likely whatever manner you apply, if it's off campus or through a referral, even if it's on campus, you're going to be connected with the recruiter, and they're going to most likely set up a screening call for you. This is going to be maybe a medium level question to assess if they should take all your on-site rounds or not. I don't think like मेरे टाइम पे तो किसी ने भी इंटरव्यू, किसी ने ऑनलाइन असेसमेंट नहीं दिया था. There is always going to be this screening round, and if you pass this round, then you're going to get your on-site interviews. There are going to be around 5 rounds. 4 of them are going to be competitive coding, and 1 of them is going to be it's called a leadership and Googleness round. Normally in a competitive coding round, you can expect either 2 medium questions or 1 hard question that you need to solve and code in 45 minutes. And in the Googleness and leadership rounds, you're going to be asked questions of the form that क्या कहते हैं, have you ever been in a situation where this has happened to you, and how did you react to it? Or like if there was this hypothetical situation, how would you solve this problem? So those are the kind, and they're going to try to assess you on different attributes. So yeah, that's what the process will look like. After these 5 rounds, the interviewers don't really like, the interviewers submit what their recommendations is, and the hiring committee sits down. They look at your resume and experience and everything. Then they look at what different interviewers have to say. It's okay if you bomb 1 round, that is why. All your rounds don't have to go perfect. And they make the decision based on how you have performed in these interviews. ओके ग्रेट. एंड फीलिंग क्या थी मतलब जब आपको पता लगा कि हो गया फाइनल सिलेक्शन? आई नो कि अच्छी होगी, गूगल में हुआ है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या था पूरा उस टाइम जब सिलेक्शन हुआ था. मतलब मुझे तो नहीं बिलीव हो पा रहा था कि हो गया है. सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल. आई वॉज लाइक कि क्या कहते हैं, यू नो, कि मुझे लाइक व्हेन विल आई गेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ये वो. आई वाज लाइक वेरी स्केप्टिकल ऑफ इट कि ऐसे किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया मुझे ऑनलाइन. बट या देन लाइक थिंग्स, it's a very exciting thing. मेरे लिए personally मेरी dream company थी. I always wanted to work in Google because I had heard the culture is really great and I wanted to experience that culture. So yeah, it was really exciting. And yeah, it was, yeah, whatever getting your dream job feels like. Okay, so let's now move to the last part of the video, which is life at Google. So वहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्क लाइफ कल्चर कैसा है, मतलब कि क्या ज़्यादा ही काम है एंड मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, कैसा है अंदर कल्चर, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा. So I think in my first week when I joined, like one of the first things that my buddy told me was that अपने कैलेंडर पे मार्क कर लो तुम्हारे working hours क्या है, so that people don't set up meetings outside it. And that's like they're very nice people. They will not put too much pressure on you. You get to decide your own deadlines, and they have a very open culture. I can message any, like
I can set up a meeting with. I am pushed to set up a meeting with my director, with all my colleagues, and try to get to interact as much with people as I can to understand the product that I'm working on. It is a, and I am someone who asks a lot of dumb questions to understand ki ho kya raha hai. So it was really nice because everybody was very open to it. You can just message anybody and ask them, you know what, if you're free right now, can we just have a one-on-one call and collaborate on this together? So that is really nice. Work-life balance definitely help, and yeah, it's a very nice culture to work in. Also, they're very open to what you want to work on. You get to choose. Like, there are going to be a bunch of uh, projects that are going on. You can tell कि तुम्हें किसमें काम करना है, as well as क्या कहते हैं, they also have this concept of if you want to try something new, you can take a 20% project. So you can give 20% of your time to a new project. And if you like it, you can maybe permanently shift to it. It's a way to figure out what your next step is going to be. So that's something that was new for me. And I thought that was a great idea. या साउंड्स ग्रेट एंड मतलब कि जॉब ज्वाइन करने से पहले आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी इफ़ यू आर गोइंग टू गूगल, एंड जब आप जॉब में आए तो क्या वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल रही कि नहीं? या आई मीन मतलब I think the biggest expectation was the office is going to be really great, so that was really sad. But uske alawa, yeah, definitely everybody was very nice, and I was very apprehensive, like when I was joining ki, like what if I will not be able to fit into the environment, like mujhe in a technical capacity. But when you join, they have this around 3-week GTI, Google Tech Immersion program, which is where they help you explore the culture as well as the different technologies that are there at Google. And that was really great. Also, like if any of you join like after the lockdown, you're gonna go for 3 weeks to Singapore to do this. So that's really awesome. And I think that was that project, like those 3 weeks and you also like get assigned a team and you build a project with them. So that's really cool. So that really helps ramp you up on a broad idea of how different things at Google work. And that's really great. So thank you very much, Astha, for coming here and sharing your experience. I literally learned a lot from this video. But जाने से पहले, if you like to share any message to the viewers. So there's this line from BoJack Horseman that I really like, which I think applies to your coding preparation if you are applying right now. It says, it gets easier, it gets easy day, but you got to do it every day, and that's the hard part. So I would say go ahead and like best of luck. And something like I would really like to say is that I have noticed that like what I get asked a lot is about how to get into Google, and the biggest issue that I think there is that people don't apply for Google. Like I did not apply for Google. I was lucky. A recruiter saw my profile. But if you had left it to me, मैं कभी apply नहीं करती हूँ, मैं कभी घुसती नहीं. So I would definitely suggest that you should all apply. And क्या कहते हैं? So yeah, and best of luck with your process. Thank you very much for the great information, Astha. एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड इफ़ यू डू लाइक आवर कंटेंट देन इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉन्टैक्ट आस्था ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल्स, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच आस्था फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं ऐसी किसी अगली और अच्छी वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.